Assalamualaikum everyone. We're back with another video. Today we're going to talk about Pak studies, and we have our guest speaker with us, Ayesha. Ayesha, please introduce yourself. Asalamoalikum. My name is Ayesha Samra, and I'm currently doing A-levels in Roots. My subjects are physics, chemistry, bio, and I also have maths as an additional one. So you're guessing it right. I'll be pursuing medicine in future, inshallah. इंशाल्लाह। तो आयशा, आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्जेक्ट अबाउट, मतलब आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? Are we talking about Pak studies in Yes. this one, right? Yeah. Okay. So basically, Pakistan studies is a combination of geography and history, and you have to give this exam in your second year of O levels or IGCSE. And this paper is same for both O levels and IGCSE. मतलब एक जैसा पेपर होता है, although थोड़ा सा different होता है criteria marking का in IGCSE and O levels, but paper is exact ditto copy. दोनों को एक ही पेपर होता है. And हमारा जो पेपर होता है, it's basically paper 2, zone 2. So there are like 5 questions in both of those paper, history and geography, and the time limit for both paper is 1 hour 30 minutes. That is pretty short. And shall I go in further detail, Abhi? नहीं. Sorry. I'm so sorry. नहीं, एक second. अच्छा आयशा, एक सेकंड, मैंने एक और बात भी पूछनी है। आर यू श्योर कि अभी सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, तो पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ? सिलेबस में आज तक चेंजेस तो नहीं आए. नहीं, सिलेबस मतलब इन्होंने चेंज किए हैं ना बहुत सारे, जैसा इंग्लिश का पेपर 1 पेपर 2 कर दिया, पेपर 2 पेपर 1 कर दिया है। आई थिंक पाकिस्तान इस्लामियात में आज तक कोई चेंज नहीं आया. बस ठीक पाक है, स्टडीज फॉर दिस वन. तो ठीक है, सही है। सही हो गया. ठीक है आयशा, हमें थोड़ा बहुत ना आप सिलेबस के बारे में बताएं, पाक सीरीज के, लाइक हिस्ट्री का अलग और ज्योग्राफी का. अच्छा, so in history there are like 3 sections. जो कि हमारा first section is about Muslim reformers, about Mughal Empire, और about our languages. Like it's before Pakistan वाला जो era है, it covers that part, East Indian Company और subcontinent वाला. Section 1 is about that basically, and section 2 is basically how the developments about the creation of Pakistan, what developments took over the years from 1900 till 1947 that led to the development of Pakistan in 1947. And in section 3, it's about Pakistan, how it has gone through from 1947 to till 2000, the different political leaders, what they did, what were their successes, how Pakistan had relation with other countries and stuff. Section 3 is all about that. And for what about geography? And for geography we have like I guess it's 10 chapters. It's 12. It's 12, right? हाँ, it's either 12 or 14. I don't know. No, it's मैंने 12. किए नहीं थे तो इसलिए मुझे याद नहीं है. It's been so long, so I guess it was 12 chapters. And starting from is basically topography, and then about forests and stuff, and eventually आपके industries and resources and population and stuff. Population It's सबसे quite अच्छा chapter था, मेरा favorite. Yeah, it was. It was It the was easiest one. easiest. Yes, it और was very forest interesting वाला भी. भी. मुझे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा लगता यार था. I इसको don't know निकाले, why. इसको मीटिंग से बाहर निकाल दूं आयशा. निकाल दो. तो एग्रीकल्चर किसको अच्छा लगता है? वहाँ से अच्छा था. Literally the agriculture और जो वो industries वाले topic थे, I literally hated them. उनको निकाल दो. Geography was super good. सही बात है. I don't know, maybe it was because like I Maybe you belong need to from get out of here. रुमैसा, चुप कर जाओ तुम. अच्छा ठीक है. अच्छा ओके. अच्छा आयशा, तुम कंटिन्यू करो. आयशा, walk us through the paper. थोड़ा सा components और question types थोड़ा सा हमें बताओ. टाइम के बारे में क्या, तो उस पर elaborate करो. Achha, so for Pakistan studies we have history and geography. Paper 1 is history or paper 2 is geography, and they both have the same time limit, that is 1 hour and 30 minutes. And first let's go with history and then we're going to proceed to geography.
So for history we have like two sections. एक section 1 होता है जिसमें एक ही question होता है. It has like 4 parts and that one is compulsory, you have to do it. The next, that is section 2, is like 4 marks, 4 questions होते हैं that are optional. उनमें से हमने कोई से 2 करने होते हैं and they're each of 25 marks and they have like 3 parts. So in question 1, that is compulsory, we have like a source question that is similar to a comprehension one. matlab a source is given and you have to write about the question, whatever that is asking from that source. The next question is similar to like it's 5 marks, but it's similar to the one that we do. Like, we have then a question, एक picture दी हुई होती है and we have to infer from that picture and write how like it has how it relates to the event that we have studied. And then we have like a 5 mark and a 10 mark question that is similar to a 7 mark and a 14 mark question. तो जब मैं वो explain करूँगी, so I'll explain that as well. It's the same thing. So proceeding to section 2, इसमें हमारे पास 2 questions होते हैं out of 2 questions करने होते हैं out of the 4. So basically there are 3 parts to each question. The first one is a 4 mark part, जिसमें you have to basically write 4 statements about something. Like हम एक example ले लेते हैं. For example, jihad movement का question है, what is jihad movement? So in that one we have to write like what was jihad movement, who led it, किसने start की, in what year that took place, उसका aim या goal क्या था, and what was the outcome of that. So basically कोई से 4 points लिखने होते हैं about that, about the question, whatever that is, and that is how you achieve like a level 4 if you get all those first 4 statements right. And for the next part, that is 7 mark question, उसमें भी मुझे छींक आने लगी. okay. So हाँ, for okay, the sorry. 7 mark part, that has also like a level marking के accordingly वो भी mark होता है, and there are 3 levels. So level 1 is a simple statement. आपने कुछ भी simple statement लिखनी होती है, like any sentence regarding to the question that is asking. The level 2 is basically identification of the reason or the cause of that event, and level 3 is explanation of that reason, like what was it and how it is a reason to that question. And proceeding to a 14 mark question, उसमें भी it's also similar to 7 mark, but उसमें थोड़ी सी addition हो जाती है, because in a 7 mark आपको 3 reasons लिखनी होती हैं as compared to a 14 mark, उसमें आपको 7 to 8 reasons लिखनी होती हैं. It is like a 14 mark. So the same goes with that question. आपको level 1, that is simple statement, level 2, that is identification of reasons, and level 3 is explanation of these 7 to 8 reasons. Like always go for 8 reasons because 7 is a requirement, but एक extra हमेशा होनी There चाहिए because wasn't you don't 6 a need. requirement. It was 7. हमें तो ये बताते थे. अच्छा, हमारे यहाँ Because 6 I था. used to. पर वैसे याद है Because सरजमल कहते थे 6 मिनिमम और मैक्सिमम एक आध एक्स्ट्रा लिखा करें ताकि गलत हो जाए तो आपके नंबर ना कटे. हाँ, I think 6 ही था. हाँ, so तो आयशा ये approximately सारे 6, स्कूल्स not वाले टीचर्स 7. बच्चों के साथ स्कैम कर रहे हैं असल में. नहीं, और इसमें आई थिंक फिर कंक्लूजन हमारे का भी साथ एक काम नंबर हो होता रहा है है. ना. कंक्लूजन का एक मार्क होता है और एक, हाँ, एक कंक्लूजन का होता है बस एक मार्क, एक 14 conclusion मार्क्स पे. होता है. हाँ. हाँ. अच्छा आयशा So go कंटिन्यू. for 7 to 8 reasons. 6 या 7 होती है approximately, but always go for an extra one ताकि अगर एक कोई गलत हो जाए so you have an addition one. क्योंकि there's no negative marking in Cambridge examinations, so it's always good extra लिख दिया करो. और the level 4 is basically the conclusion of that कि आपको क्या लगता है, what was the most important reason for that and why. उसमें आपने अपना बताना होता है, like why do you think so. ये नहीं कि book में जो lines लिखी हैं वही दोबारा लिख दो. It's basically your own conclusion. It can be anything, but मतलब बस उसकी logic हो, कोई sense बनती हो, and it can work out. सही हो गया. Okay. So proceeding to geography. For geography हमारे पास we have like 5 questions and we have like they're optional. हमने उनमें से कोई से 3 करने होते हैं, like each of them is 25 marks और उसके different parts होते हैं. There isn't much. Geography का काफी simple paper होता है. For me it was. It is like उसमें questions होते हैं, graphs होते हैं, graph से infer करके बताना होता है, those bar charts,
and there is a question that is a 6 mark question that is the most important one. वो like हर question के end में होता है एक 6 mark question. वो सबके लिए Like मसला that is करता है, आपकी सारे मार्क्स वही क्वेश्चन खराब करता है. उसमें भी लेवल मार्किंग का सीन होता है, बट एज सच दिस, सो बेसिकली इट कैन बी अ क्वेश्चन के लाइक फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन वाला ले लेते हैं कि इज लेट मी डिवाइस अ क्वेश्चन रियली क्विक. ठीक है. सो मुझे तो याद ही नहीं है हमने क्या पढ़ा है. वो क्वेश्चन डिवाइस करी है. इधर मुझे तो याद ही नहीं है. इसलिए उसकी डिस्टिंक्शन आई है ना हमारे ए स्टार्स में. अच्छा, सो is birth control effective in controlling population? जैसा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, that is we took from population because it's the easiest one. Yes. So basically in this one we have to write for and against that point. Like, why do you think that birth control will help in population control? You're gonna write the reasons for that. Basically book में होती हैं, and some is your evaluation, of course. So you have to write 2 or 3 reasons why you stand with that point. Why do you think that is correct? And then you have to like use you have to tell why that is not correct. Like, why do you think so it is not effective enough? And then in the last part you have to write a conclusion कि आपको क्या लगता है? Are you going with the statement that the Cambridge is given? Are you in favor of against the one? और इसमें one thing that is super important is examples. Examples बहुत important होती हैं. And for me, I also used to write example in a 4 mark question. वो जो explanation वाला एक लंबा होता था पहले, मैं उसमें भी लिख देती थी if I had one. So always go for examples. It basically shows, और खाली book की नहीं, if you know about your country enough, तो आपको खुद भी आती होती हैं. सही है. You Perfect. can write like book से अलहदा भी लिख सकते हो. It's not necessary कि book वाली ही लिखनी है, but that has to be correct. अच्छा, लेकिन अगर मतलब इवन दो 6 mark questions were slightly difficult, लेकिन उसमें एंड में मुझे हमेशा लाइंस कम पड़ जाती थी क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह दी होती है. It is. That was a problem for me as well. और मैंने अपने Cambridge examination में additional pages पे इस्लामियत हो गया, पाक सीरीज हो गया, whatever that was, मैंने हर किसी में additional pages दिए थे because जगह कम पड़ जाती है and you cannot write below the lines. So या तो कोई उसमें बस ये ऐसा होता है issue कि नहीं आप होता. एडिशनल पेज मांग लें और आप बस उधर मेंशन कर दें कि ये वाला क्वेश्चन एडिशनल पेज के इस पेज नंबर पे. हाँ, that is important. ये बच्चे मिस भी कर जाते हैं. They don't mention that we have done that. तो whenever like on the last line जो भी आपने लिखी है उसकी जहाँ भी spaces end हो रही हैं नीचे लिख दो like this part is continued on the additional one. So you have to mention the part on the additional page और वो वहाँ से check हो आप जाता है. आराम से कंटिन्यू. ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको कैम्ब्रिज एडिशनल पेजेस वगैरह लेने नहीं देता या इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन. तो इस तरह का कोई सीन नहीं है. I did it. हाँ. I did it for every paper. Like apart from sciences, जो भी थे, the ones that require like lengthy थे for EM हो गया, Islamat Park series, I go for it. I did go for additional pages और कोई मसला नहीं होता. हाँ, तो उसके बारे में you should stay comfortable. So आयशा एक दफ़ा ये भी क्लियर कर दें कि कौन से बच्चे जो हैं उनके लिए कंपल्सरी है पाक स्टडीज़ और कौन से उनके लिए कंपल्सरी नहीं है ओ लेवल्स में. Pakistan studies Islamiyat or Urdu. These are the 3 subjects that you give in your O levels or IG2. तो these 3 are compulsory for Pakistani students. मतलब अगर आपका passport और domicile पाकिस्तान का है तो these are compulsory. But for citizens जो बाहर who live in abroad और उनका passport किसी different country का है, so it's not compulsory for them to give those exams. Yes. और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अभी ये ना दें तो बाद में ये है कि आपको पाकिस्तानी कॉलेजेस में भी फॉर एग्जांपल ए लेवल्स में या एफएससी में आपको एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि आपकी इक्विवेलेंस नहीं बनती और ना आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं. बट फॉर दोज स्टूडेंट्स आपकी इक्विवेलेंस में भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी उसके बगैर बनती नहीं है. These 3 are compulsory for Pakistani students. या बट अगर आपकी कोई और सिटीजनशिप है तो ये है कि अगर आप अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा दें तो फिर आपको मसला नहीं होता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ स्ट्रैटेजी का. तो आयशा आपकी स्टडीइंग स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आपने किस तरह पढ़ा है सारा कुछ? अच्छा, so it's been so long.
काफी टाइम हो गया. So basically, I used to be a morning person. I used to wake up like subah fajr ke time, and then I would like study continuously. हाँ breaks लेती थी in that phase from like सुबह फजर से लेके till रात तक I used to study, or with breaks, not like continuous study but with breaks, or हम like you मैं have to ब्रेक के take साथ breaks. थोड़ी थोड़ी स्टडी करती हूँ. मतलब I have seen a lot of people जो कि थ्रू आउट लाइक 2-3 घंटे एक साथ पढ़ने बैठ जाते हैं, देन दे टेक अप लॉन्ग इनफ ब्रेक, और फिर वो ब्रेक खत्म ही नहीं होती. सो डोंट गो फॉर दैट. लाइक 1 घंटे बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज 1 घंटे बाद गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड डू अ वॉक या डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, और इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है. यू आर गुड टू न्यू फ्रेश. एंड what going for the strategies part, there isn't much. Matlab, I didn't use anything different or what. It was past papers karo, like a lot of, not a lot of them, but jitne bhi karo, learn from them. ये नहीं कि बस पास पेपर्स उठा के करते जाओ एंड यू डोंट इवन सी आपका सही है गलत है, बस चेक कर लिया, यू गेट दैट मार्क्स और पेपर फेंक दिया साइड पे. Don't go for that. Open up your marking key. जो whatever you learn new, write it in your notes. That is what I did. मतलब whatever you think कि हमने नहीं पढ़ा हुआ, and that is in the marking key, write it in your notes. क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हो आपको याद नहीं रहता बाद में. But that can be controversial because there are people जिनको याद रह जाता है. नहीं Not नहीं for रहता. me. मैं तो जितने लोगों को जानती हूँ Not किसी को for भी नहीं me. रहता. लिखना पड़ता है, आपको लिख लेना लिखना चाहिए. पड़ता है. लिख लेना चाहिए. एंड आई ऑलवेज से कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी डज नॉट मैटर एट ऑल इन कैम्ब्रिज के जो पास पेपर्स होते हैं. जितने करो, जस्ट लर्न फ्रॉम देम, इतने करो. आई एम नॉट सेइंग कि कोई 10-15 साल के पेपर्स उठा लो और शुरू हो जाओ, बिकॉज ऑल्दो के पेपर पैटर्न भी काफी चेंज हो चुके हैं. सो ऑलवेज गो फॉर द लेटेस्ट 3 or 4 or 5, whatever that is, whatever you're comfortable with. I've seen people जो सिर्फ 2 साल के पेपर करते हैं and they've got an A star. So it works out differently for everyone. Do जितने भी करो, learn from them and see how far you have come in that. आपकी कितनी progress हुई है over the past papers you do. And अच्छा, Examiner any report. YouTube channels जो आपने इस्तेमाल किए हो? no, I didn't use any YouTube channels. ठीक हो I गया. अच्छा, started using YouTube channels in my A levels. damn. Oh IGs में तो God, जरूरत ही नहीं मैंने लगती तो थी. O level survive ही YouTube पे किया भाई. मैं तो YouTube is my best friend. मेरे कपड़े भी YouTube बने आज. Yeah. Right. So YouTube wasn't a thing for me in IGCSE. मतलब I never used that. Although sciences के लिए कभी I used that, but not for these subjects. I never used that. अच्छा, I these always are used pretty books. self-explanatory. मतलब आपको पढ़ के समझ हाँ, आ जाती है कि there's क्या no हो रहा है. need. मतलब इसमें it's basically not to be controversial, but it's rote learning. It's in the हाँ, book it's a and lot it's of rote about past learning. papers. ये It's a बात है. lot of that as compared to sciences, जिसमें you need to understand the concept to answer the question. So इसमें it's explained and stuff, तो आपको किसी चीज़ की explanation की ज़रूरत ही नहीं होती. Yes. सही हो गया. And एग्जामिनर रिपोर्ट्स के बारे में बताएं, आपने पढ़ी थी क्या? उनके yeah, साथ experience है आपका? I did read examiner reports, and I would recommend all of the students जो भी appear हो रहे हैं, always read examiner reports or example candidate responses. These both are so important. मतलब when you like do a past paper, उसकी examiner report निकालो, see the year and stuff, and then read what basically it tells you कि what average students did in this question and what Cambridge expected you to do in that question. So that really gives you an insight कि Cambridge आपसे मांग क्या रहा है in the question. It really helps. So always look out for the examiner report after doing a past paper. Or the same goes for example candidate responses. हमें तो हमारे teachers खुद दिखाते थे example candidate responses. That is how I get acquainted with that. So it really helps. आपको पता चलता है how what pattern do you need to write your answer on, और Cambridge आपसे क्या expect करता है, how to write it and what points and how they do level marking. And एक दफा I remember कि I was reading in assignment का for वो जो 14 mark question होता है. I don't know I should talk about assignment or not.
So I did that in that example candidate response, and I was like, I can write better than that. Matlab, it was so, it was so simple and stuff. Or usko, the examiner had given her 100% marks in that question. And I was like, I can write so much better than that. अच्छा ये So अक्सर होता है everyone एग्जामिनर was रिपोर्ट्स पढ़ के बंदा कहता है ओ मैं तो बहुत अच्छा लिख सकता हूँ कॉन्फिडेंस आता है लेकिन ओवर confidence कॉन्फिडेंस आता है. ना हो मतलब इतना भी ना हो, but there should be some. ये हाँ भी नहीं कि आप अपने आप को इतना डिग्रेड कर दो that you cannot do it. सही बात है अच्छा आयशा which books were you using जिस तरह तुम कह रही हो कि तुमने नोट्स वगैरह So बनाए for Pakistani history, I used two books. दोनों वो जो नाइजल थी, नाइजल स्मिथ एंड नाइजल केली वाली. And for geography, there was only one book, the one Humana Sethi, the one by Humana Sethi. अच्छा That मेरा was it. पर्सनल ये है ख्याल मुझे नाइजल कैली और नाइजल स्मिथ इंतहाई यूजलेस बुक्स लगी थी पर्सनली बिकॉज मुझे लगता था कि उसमें पॉइंट्स उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद तो आई वाज रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट ऑन माय ओन व्हिच आई डोंट लाइक टू डू मतलब समझ आ गई होगी अब तक तो मैंने और मिसा ने सर अजमल की एकेडमी ली थी उनकी बुक जो है ना हमें मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी मतलब अच्छा सर अजमल की एक बुक है दैट इज क्वाइट पॉपुलर विद स्टूडेंट्स आई नो हमारी क्लास में काफी सारे बच्चों के पास ही बट आई नेवर यूज दैट अच्छा सही है इट्स हाँ नॉट तो नेसेसरी एग्जैक्टली मतलब इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जाएं 2-3 बुक्स देख लें खरीदने से पहले और आप देख लें कि आप किस तरह के इंसान हैं कि आपके साथ किस तरह की बुक रेजोनेट करे जो आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करे आप वो खरीद लें तो इट्स नॉट कि आयशा की क्योंकि डिस्टिंक्शन नाइजल केली और नाइजल स्मिथ पढ़ के आई थी तो आप भी वो पढ़ेंगे या आपने वही लिखना है इट्स नॉट नेसेसरी अगर आपको उस बुक से ज्यादा अच्छा समझ आता है यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट बुक एग्जैक्टली एंड इस्लाम में तो पाक स्टडीज का होता ही ये सीन है दैट द मोर रेफरेंस बुक्स यू हैव द मोर नोट्स यू हैव द मोर यू लर्न द मोर बेटर यू आर एट दैट थिंग तो ऑलवेज कीप रेफरेंस बुक्स फॉर दीज और इतनी ज्यादा भी मत खरीदो आई सीन पीपल जो कि व्हाटएवर जो स्कूल के कोर्स में गिवन होती है दे बाय एवरी वन ऑफ देम और उनमें से हार्डली एक या दो पढ़ते हैं सो डोंट गो फॉर टू मच बुक्स जो कि मेन बुक है एक या दो मैक्सिमम दो रखो फॉर पाक स्टडीज आई वुड से पाक स्टडीज हो जाते हैं फॉर इस्लामियात आई वुड से बहुत सारी रखो हाँ इस्लामिक बहुत मसले होते हैं इस्लामियत के लिए बहुत सारी रखो बट फॉर पाक स्टडीज टू आर इनफ और ज्योग्राफी के लिए तो एक ही काफी है दैट बुक इज सो गुड हाँ हुमाना सफिशिएंट है उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती यस ओके अच्छा अब सीरियस जो आई थिंक पूरी वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक मेड योर पेपर डिस्टिंक्शन वर्दी वाज इट द राइटिंग वाज इट द एग्जांपल्स लाइक यू सेड यू गिव इन ज्योग्राफी इस तरह की छोटी-मोटी कुछ टिप्स बताएं लोगों के लिए जो यू थिंक यू दैट मेड योर पेपर स्टैंड आउट जो तुम्हें लगता है कि किसी और ने नहीं की होंगी टू बी ऑनेस्ट जब मैं पेपर दे के आई थी आई नेवर थॉट आई वुड गेट अ डिस्टिंक्शन आई डोंट नो बट मेरा जो ज्योग्राफी का पेपर एंड इस्लामिक पेपर 1 went super good and history was good too but Islamic paper 2 was I never thought I would make it. But at that time when I gave the paper, I was like, nah, I wouldn't be able to make up an A star at that point. But I never knew things would go that way. But the most important thing that I say is make your own notes. Like go through reference books, go through marking keys. मतलब आपके पास जितने भी अच्छे notes हैं, you have notes by top teachers of Islamabad of Pakistan, जिसके भी हैं, या आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ दोज नोट्स आउट ऑफ बुक आउट ऑफ मार्किंग की जो भी आप कर रहे हो ना summarize all of that knowledge that you think is important from each one of them each of the resources that you have and make your own notes that was the most important part I guess what I did was although I wasn't able to complete Islamiyat ke notes because it was so lengthy I did it at the end, so I did go for the most important questions. So always make your own notes. And the other thing is that one thing that I've seen in people is that past papers karte jate hain and they don't get it checked. They don't get it checked from someone. What I did was like जब मैं school जाती थी, I would get it checked by my teachers, and at home I had like elder brothers. They had also done O levels, so मैं उनसे check करवा लेती थी.
what I did at home, and that really boosted me क्योंकि मेरे जब गंदे marks आते थे in the paper that I did, I was like I can do better than that. So I did practice a lot. Always get your paper checked. ये नहीं कि खुद marking की से कर लिया और अपने आप को कोई बहुत ही ऊपर का समझ लिया. Because I've seen people doing that. Marking की से check कर लेते हैं and then they think they have like a level 4 answer, जो कि नहीं होता level 4. Although it contains all points, but एक वो order होता है, एक like your way of writing also does matter. आपका expression is what makes your answer unique. Your way of writing basically. And for mark series, I would say for geography, go for a lot of examples. I told that already कि मैं 4 mark question में भी examples डाल देती थी because I knew that, and it has to be correct. Always go for correct ones. ये नहीं कि आपको you're unsure और आप डाल दो. Always go for the one जो आप sure हो. And there are a lot in the book as well. तो अगर आपको खुद नहीं आती, there you can go for the book ones too. Yeah. और तो आयशा उसके बारे में बताओ कि पेपर में साफ लिखना कितना जरूरी है. That does not matter at all. My paper was like इतना होना चाहिए कि बस पढ़ा जाए. बस That is more than enough. मतलब क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता, you have like leisure at 1 hour and 30 minutes, उसमें you cannot complete that अगर आप आराम से और like साफ लिखोगे, and that does not matter at all. Always go for your content rather than your handwriting and presentation. That does not matter at all. और अगर मैं निकाल के दिखा सकती पेपर से मैं दिखा देती, but it should be just worth reading. इतना हो कि पढ़ा जाए. हाँ सही है. और आयशा एक और चीज बताओ, जो क्वेश्चन ऑर्डर में करना जरूरी है या नहीं? जैसे अगर मैं फर्स्ट करो क्वेश्चन सेक्शन बी से पहले कर लूँ और सेक्शन ए बाद में कर रही हूँ तो For history, yes. Although I personally like to go in the chronological order जैसे है उसमें ही go with the flow, but I've seen people जो कि पहले आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, the one that they think is the easiest one, they do it first, और बाद में जो difficult होता है they do it in the last. But for me that is the complete opposite. I always go for the hard ones पहले, because I don't know, इनमें time नहीं होता क्या होता है, because your mind is so in a hurry at the end. So always go for the hard ones पहले. I would say that. I know some people won't agree with me, but what I used to do was I always went with the hard ones and then the easier ones. Yep, in the order जो भी होता था for history. But For just try geography, not to mess up the order of the parts क्योंकि I think that matters कि आप एक ही order में question 2 start किए तो A B C एक ही order में हाँ. करें वो ताकि ज़्यादा issue ना हो. मेंशन कर And दें अगर आपने it is बाद really में किया. difficult for the examiner to read as well. वो भी फिर frustrate हो जाते हैं, तो it's better कि आप order में कर लो. Exactly. तो हाँ और बस बिल्कुल लास्ट मिनट टिप्स कोई बता दो जो लिटरली बस पेपर से 1-2 दिन पहले इंसान को करनी चाहिए फॉर पार्क सीरीज. अच्छा, okay. So what I say is जो the last one, that is the last week जो भी है एग्जाम से पहले अपने फोन को अलमारी में बंद कर दो. I know it is so hard at first, but I know it's worth it. I have done that personally, so I know it's worth it. That last week is super important. अपना फोन बंद कर दो सबसे पहले. अगर नहीं भी बंद करना, just use it only once a day. Don't go for like अगर जो भी आप breaks ले रहे हो, don't use your phone. Instead, go do for anything, help your mother or whatever that is. Go for a walk or something, but don't use your phone in those breaks. That really distracts you. तो जो आपका last week होता है before exams or last month, whatever you say, whenever you start studying, that is so important. That determines your grade. Because I've seen a lot of people जिनके पहले grades नहीं आते, and in the end they do their last month वाली preparation और उनका इस तरह जाता है. I personally did that too. So हाँ ये हारिस ने भी यही किया था. I remember I think he started studying लास्ट मंथ में भी नहीं, लास्ट वीक आ गया, 2-3 दिन खत्म हो गए और पता नहीं मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो कैसे पढ़ता है और उसका ग्रेड कैसे आया था. बट यह है कि इफ यूर समबडी जो बहुत आखिरी टाइम पे आ गए हैं तो विद ओ लेवल्स, आई मीन आई वुडंट से साइंसेस में, बट देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन. मतलब आपको जब रियलाइज हो जाए आप पढ़ लें तो आपका ग्रेड आ सकता है. यू कैन ऑलवेज 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 सेव योर ग्रेड.
I already said that मेहनत करो हो जाएगा. Like do not lose hope. Even if you start studying in the end, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. Or go through example candidate responses. That is so important. Get your papers checked by someone for past studies, especially. ये नहीं कि आप करते जाओ and you learn nothing from them if you don't get it checked from someone. And for geography, give a lot of examples. Or for the history one, 14 mark question, उसमें भी जो आपकी conclusion होती है, that matters a lot. That says a lot about you. So always give a really solid conclusion for that. And matlab, that really gives an insight about who you are as a person. Matlab, it really helps for the examiner to understand what kind of thinking you have. So always go for a solid conclusion in अच्छा the उधर I would 14 say mark कि question. conclusion में भी बाज़ दफ़ा you don't agree, मतलब real life में you wouldn't agree with something, but if you have solid reasons to stand in favor of something that असल life में maybe you don't agree with, तो always go for that. मतलब आप ये नहीं कर, अब अगर मैं फर्ज करो XYZ मूवमेंट के साथ agree नहीं करती असल लाइफ में, but मुझे पेपर में agree करने के लिए करना बाद तो मेरे है. पास solid reasons हैं. Because you have a solid reason for that. That is a thing. Yes. और ये बच्चे गलती करते भी हैं. ये Although करते they हैं. personally don't, और वो अपनी personal reasons शुरू कर देते हैं. Always go for the fact कि what is the reason? Why do you think so? मतलब it's not कि आपकी personal opinion इतनी matter करती है that question, but always go for a solid or good fact or reason. हाँ, you या have. आपको कोई सॉलिड अपने मर्जी से कंक्लूजन किसी छूने मत पढ़ी करो. हुई याद आ रही है और आप कह रहे हो कि यार अच्छा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लेकिन आप उसको छोड़ के आ जाओ, तो उस तरह मत करें, मतलब अपने आप को दरम्यान में मत लाएं बेसिकली. Yeah, exactly. And for जो inference वाला question होता है picture वाला, उसकी do a lot of practice. Apart from the past papers, हमारे टाइम पे almost कोई 5 past papers है. That time 5-6, क्योंकि it was like we gave in 2020, तो this thing started from 2015 में syllabus change हुआ था, तो ये inference वाले questions from then on we have like 5 or something papers. तो what our teachers used to did was उस जो picture वाला question होता था inference वाला, they used to have their own examples, or other teachers they create those, और उनको and we used to solve that once. So it really helps. Apart from आपकी marking की नहीं होती ना उसकी, तो it really helps you to go out of your comfort zone or think about that, think about another perspective that the picture is showing. That is really important too. Or I think that is it. तो थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग. हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you guys for having me.